Hello everyone. We have seen the proof of the some standard functions, okay, by using Laplace transform. So let make a list of the formulas of Laplace transform. So first one, Laplace transform of 1 is 1 by s. Second one, Laplace transform of e raised to at is 1 upon s minus a. Third, Laplace transform of e raised to minus at is equal to 1 upon s plus a. Fourth one, Laplace transform of sin at is equal to a upon s square plus a square. Fifth, Laplace transform of cos at is equal to s upon s square plus a square. Let's make the list here. Sixth one, Laplace transform of hyperbolic sin at, which is equal to a upon s square minus a square. Seventh one, Laplace transform of hyperbolic cos at is s upon s square minus a square. Eighth one, Laplace transform of t raised to n, which is equal to gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1, and this can be written as n factorial upon s raised to n plus 1 if n is positive integer. Okay, so these are the list of the formulas which we have proved, and now we are going to use these formulas directly to solve the problems. Based on Laplace transform of standard function. Okay, so now let's the first problem number 1. Problem 1. Find Laplace transform of sin 3t plus e raised to minus 2t. Okay, so this is our question. We have to find the Laplace transform of sin 3t plus e raised to minus 2t. Okay, so solution. Okay, so let's take this function as f of t. So let f of t is equal to sin 3t plus e raised to minus 2t. Okay, now by taking Laplace transform of both sides, so taking Laplace transform on both sides, so we'll get Laplace transform of f of t, which is equal to Laplace transform of sin 3t plus e raised to minus 2t. Now linearity property जो Laplace transform की है, we can distribute between plus or minus, so we can write here Laplace transform of sin 3t plus Laplace transform of e raised to minus 2t. ओके, अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये Laplace transform sin at के फॉर्म में है. ओके, और Laplace transform of sin at, इसमें sin स्टार्ट हो रहा है s से, तो न्यूमरेटर में s नहीं आएगा, a आएगा, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3. सो विल राइट 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर Laplace transform e raised to minus 2t. ओके, तो ये हो गया e raised to minus at के फॉर्म में, मींस जो पावर है e का वो नेगेटिव है, तो s प्लस में आएगा. सो ये हो गया 1 अपॉन s प्लस 2. Okay, so which can be written as 3 upon s square plus 9 plus 1 upon s plus 2. So this is
the solution of the given problem. Okay, let's take one more problem. Problem number 2. Okay, so find Laplace transform of sine 2t minus cos 2t raised to 2. Okay, so sine 2t minus cos 2t the whole power 2. So solution, let define here f of t, this is the function, and we can write here sine 2t minus cos 2t whole square. Okay, now expand it by using the formula a minus b the whole square. Okay, so I can write here sine square 2t minus 2 into sine 2t into cos 2t plus cos square 2t. Okay, and see the first here, this is the sin square 2t, 2t यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर cos square 2t that is theta again, तो sin square theta plus cos square theta इसकी वैल्यू जाएगी 1. so we can write here 1 minus, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये 1 minus 2 sin 2t into cos 2t, 2t को अगर हम थीटा कंसिडर करेंगे तो 2 sin थीटा into cos थीटा के फॉर्म में, विच इज इक्वल टू sin 2 थीटा, तो ये बन जाएगा sin 4t. ओके, इट मींस अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है sin 2t माइनस cos 2t के होल स्क्वायर का, विच विल बी सेम इक्वल द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस sin 4t. ओके, so this is our nothing but f of t. So now taking Laplace transform on both side. Okay, so we'll get Laplace transform of f of t, which is equal to Laplace transform of 1 minus sin 4t. Okay, so which is equal to Laplace transform of 1 minus Laplace transform of sin 4t, और हमें पता है Laplace transform of 1 is 1 upon s माइनस, अच्छा Laplace transform of sin 4t. ओके, साइन ए ऊपर आएगा ए की वैल्यू हमारे पास 4 अपॉन नीचे आ गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर. ओके, सो आई कैन राइट हियर 1 अपॉन एस माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16. यहां तक रखोगे तो भी तुम्हारा आंसर करेक्ट है, और इससे ज्यादा सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 16 अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, ये आएगा, ये भी हमारा आंसर करेक्ट है. ओके, सो ये दोनों आंसर हमारे, या तो ये हम फाइनल आंसर कंसिडर करें 1 अपॉन एस माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, और ये हमारा आंसर दोनों परफेक्ट है. ओके, नाउ लेट्स सी few more problems so that जो problem जो मेथड है वो प्रॉपर हमें समझ में आएगा. Okay, so next problem here we have to find the Laplace transform of cos square t. Okay, so solution, let this function, let's consider this as f of t. So f of t is equal to cos square t. Okay, अच्छा अब देखो लिस्ट ऑफ जो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, उसमें किसी भी स्क्वायर टर्म का, साइन के या फिर हाइपरबोलिक के स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है. इट मींस कि ये जो cos स्क्वायर टी है इसका डायरेक्ट आंसर हमें नहीं मिलेगा. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस cos स्क्वायर टी को लीनियर इक्वेशंस में चेंज करेंगे. ओके, सो आई कैन राइट हियर 1 प्लस cos 2t अपॉन 2. ये हो गया cos स्क्वायर को हमने चेंज किया लीनियर में, सो 1 प्लस cos 2t अपॉन 2. ओके, नाउ अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं. सो f of t, सो बाय टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन both sides, so we'll get Laplace transform of f of
t, which is equal to Laplace transform of 1 plus cos 2t upon 2. Okay, now I can take 1 by 2 as a constant outside the Laplace, and here I'll get Laplace of 1 plus Laplace of cos 2t. Okay, now so this is 1 by 2. Now we know that Laplace of 1 is 1 by s plus Laplace of cos 2t, which is equal to s upon s square plus a square, that is 2 square. Okay, now I can write here 1 by 2 by cross multiplication. I'll get s square plus here s square, again here s square plus s square, that is 2s square हो जाएगा यहाँ पर, plus 4 upon s into s square plus 4. Okay, now here we can take 2 common and these 2 will get cancelled, so here we'll get s square plus 2 upon s into s square plus 4. So this is our final answer. Okay, and one more problem we'll solve. Problem number 4. Problem 4. Okay, find Laplace transform of sin t into cos 2t. Okay, so remember sin t into cos 2t. अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज में था कि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म दो प्रोडक्ट फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं होगा. ओके, इसका मतलब फिर से यही है कि हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को प्रोडक्ट में से किस में चेंज करेंगे, सम और डिफरेंस में. इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला. ओके, सो सॉल्यूशन, let define it as f of t. This is our function, so sin t into cos 2t. Okay, now here I'll multiply by 2 and divide it by 2, so I'll get 1 upon 2 into 2 sin t into cos 2t. now here 1 by 2 sin a cos b. okay, so here we have 2 into sin a, जो थीटा है उसे हम a कंसिडर करेंगे, t को a और cos 2t को b, और similarly we can consider 2 cos a sin b, which is equal to here sin a plus b minus, so I can write here sin t plus 2t, that is 3t, minus then cos or sin 3t minus sin a minus b, that is 1 minus 2t, which is equal to sin minus t. okay, so I'll get 1 by 2 sin 3t plus sin t. okay, now I can take Laplace transform on both sides. So taking Laplace transform on both sides, so I'll get Laplace of f of t, which is equal to, I can take 1 by 2 outside common. okay, now Laplace transform of sin 3t plus Laplace transform of sin t. Now I can write 1 by 2 Laplace transform sin 3t is nothing but 3 upon s square plus 3 square. I can write here directly 9 plus 1 upon s square plus 1. So this is my answer. okay, now here there is a problem with this sign. Here it must be positive, so this will be negative. Let me change it. So this will be negative, this will be negative. okay, so this will become minus, minus and minus. okay, now you can multiply, cross multiply and solve it, so you will get the perfect answer.